नमस्ते सर। अब कुछ आवाज़ साफ़ आ रही है मेरी आपको? आप सुन सकते हैं? नहीं, नहीं सुन पा रहे वो। यहाँ पे तो क्लियर आ रहा है। नहीं, दूसरे लोगों को आवाज़ साफ़ सुनाई दे रही है। वो आपके फ़ोन में कुछ समस्या है, जिसकी वजह से या कंप्यूटर में कुछ आवाज़ नहीं आ रही है। ओह! Can I switch on to YouTube? This is on Facebook. Can हाँ, I switch on to Facebook? या यू कैन Maybe मे बी sound देयर, will be यस। better. हाँ, देख लीजिए। पर वो तो स्ट्रीम यार्ड से वो 2 ऑप्शंस दिखाता है, वैसे कुछ डिफरेंट नहीं आ हाँ, हर्षद सर आवाज़ आ रही है अब? हाँ, बहुत कम आती है आपकी आवाज। अच्छा, पर कुछ देखिए आपकी डिवाइस में कहीं से कोई वॉल्यूम वगैरह बढ़ाने की, क्योंकि बाकी लोगों को मेरी आवाज़ साफ़ आ रही है, सिर्फ़ आपको हाँ, आवाज़ नहीं आ ये रही है। मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ, तो पता नहीं कि माइक्रोफोन कैसे वॉल्यूम बढ़ाना होता है। अच्छा, तो आप एक बार चाहे माइक्रोफ़ोन निकाल दीजिए। इ हाँ, हेडफ़ोन हेडफ़ोन लगा के एक बार चेक करिए। मेरे पास हेडफोन नहीं है अभी यहाँ। अच्छा, ओके। तो कंप्यूटर का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा कर के चेक करिए, या फ़ोन का वॉल्यूम बढ़ा कर के देखिए, या फ़ोन को स्पीकर पे डाल मेरी के आवाज देखिए। आती है आपके पास? हाँ जी, मेरी आवाज आती है? आपकी आवाज़ स्पष्ट है। आपकी आवाज़ मुझे आ रही है, अच्छे से आ रही है। हम्म। तो उन्हीं को कहिए कुछ।
अब आ रही है आवाज? अब बहुत कम आती है। चलिए ठीक है, जितना आती है उससे हम लोग शुरू करते हैं। आप बोलिए ओके। और मैं ना कमेंट में आपको लिख दूंगा अगर आवाज नहीं सुनाई देगी तो, कुछ सवाल होंगे तो। हाँ, मैं अपने कान पर रखता हूँ ये मोबाइल, तो मैं आपको सुन सकता हूँ। ठीक है, तो जब मैं बोलूंगा तो आप अपने कान हाँ, के पास रख लीजिएगा। या ओके फाइन। ठीक है, तो सबको नमस्कार। आज हमारे साथ हर्षद पारेख जी हैं। आप ऋषि वैली स्कूल आंध्र प्रदेश में, जो कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इंडिया का स्कूल है और जे कृष्णमूर्ति के द्वारा स्थापित रहा है, वहाँ पर आपने लंबे समय तक अध्यापन कार्य किया है। और उसके अतिरिक्त और भी कृष्णमूर्ति स्कूल्स में आप अपनी सेवाएं देते रहे। आप अपनी पढ़ाई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से पूरी करने के बाद अपनी जो गहन रुचि थी उनकी सेल्फ नोइंग में, उसको लेकर के कृष्णमूर्ति जी के संपर्क में आए। और उनके संपर्क में आने के बाद, जैसा कि मैंने आपसे जब भी बात की है तो आपने संस्मरण सुनाया है कि जहाँ जहाँ कृष्णमूर्ति जी जाते थे वहाँ वहाँ वे उनके जहाँ वे पहुँचते थे ये भी वहाँ पर पहुँच जाते थे सिर्फ उनको सुनने के लिए। और उनके साथ इन्होंने बातचीत भी की है और एक तरह से सेल्फ नोइंग को, या जिसे हम एक शब्द में कहते हैं अध्यात्म, उसके लिए आपने अपना पूरा जीवन अर्पित किया है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री हर्षद पारेख जी हमारे साथ में हैं। उन्होंने अपने जीवन में जो भी सेल्फ नोइंग को लेकर के, संबंधों को लेकर के जो भी अवलोकन किया है, उसके रहस्य को हमसे आप साझा करने के लिए राजी हैं। तो हर्षद जी, थोड़ा-सा आप प्रकाश डालें कि कैसे आप कृष्ण जी की शिक्षाओं के संपर्क में आए, जो प्रमुख रूप से जितना आप डालना चाहें, अन्यथा फिर हम लोग सीधे आते हैं कि अवलोकन क्या है? या जिसे हम ओके। हाँ, ध्यान संवाद। जी, हाँ बोलिए। मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ। हाँ, आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, ओके। यथासंभव जो भी आप हिंदी में भी बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। गुड इवनिंग धर्मराज जी एंड फ्रेंड्स। मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, तो मैं इसलिए इंग्लिश में कुछ बात करूंगा। जी, तो बिल्कुल। मैं पहले ये बताऊंगा कि मैं कृष्णमूर्ति के संपर्क में कैसे आया। तो जब मैं अमेरिका में था, when I was in America, I was studying uh, for my, I have completed my master's degree in electrical engineering at Iowa State University. And in 1972, I started my PhD degree in the same university. And one day, when I was passing by our university bookshop, I saw a book of Krishnamurti through the window because the book was on display. So I did not know who was Krishnamurti, and whether he was alive or dead, I did not know. But I had heard his name because when I had read something about Osho or Rajneesh, he used to mention the name of Krishnamurti. So I only knew the name Krishnamurti. So I was curious, and the name of the book was The Flight of the Eagle. And the title attracted me, and then there was a small photograph of Krishnamurti. So I bought that book, and when I started reading the book, I found it very interesting because I felt that Krishnamurti was talking with me, and he was asking many questions in the book, and those questions were very much relevant in my life because where I was in a different culture, American culture, and I was not
very much exposed to Western culture, and I had a lot of difficulties in the beginning, and but then most of these problems were solved. Problems like financial problem or food and climate and loneliness, academic problems, all that problems were over. But I was still, my mind used to think a lot about future or about the past. And I was thinking that I was an Indian and a Hindu. And so I hesitated to communicate with people of many different nationalities and religion in the university. But Krishnamurti, when I started reading the book, he was asking the questions like, why do you think of yourself as an Indian or a Hindu or a Chinese or American? He said that our mind works in a very similar way. We are human beings, and our mind psychologically it works in a very similar way. And all human beings go through problems for thousands of years. The problems like fear or anger or jealousy, loneliness, all that problem exist in all human beings. So when I read that, then I said, I felt that, oh, I am not the only one who has this problem. Krishnaji says that all human beings go through problems. So then I begin to observe around me, because before I was not observing outside. I was so much occupied with my own problems. So I did not really see very clearly the things which were going on outside me. And when I looked more carefully after reading Krishnamurti, then I found that Americans were lonely in their own country, and they had many problems like drinking, drugs, and watching very violent films, and no relationship in the family. So when I saw it, then I felt that I am not separate. Psychologically, physically, we may look different. Our skin color is different, our height is different, our language is different, but psychologically we are similar. And when I realized that I'm a human being and I am not a Hindu or an Indian, then I opened up to people of many different nationalities, and I lived with them. I shared apartments with them, and I did not see them as an American or a Chinese or Egyptian. I lived with people of many different nationalities and religion after reading Krishnamurti, and I began to see my own mind very clearly, because Krishnaji said that our problems of psychological nature, it comes from thinking. And from thinking comes this sense of I or me. And once this sense of I or me comes, then we say, I like it, I don't like it, and duality starts. So in Krishnamurti's language, thought creates the thinker, and then thinker tries to change thought. So there is a duality. And Krishnaji said that all our psychological problems arise from this duality. So when I read that, it was something very new. First time I came across such a statement by Krishnamurti, and I wanted to verify it. And since I was working for a PhD degree, I had an office, and there was a very quiet atmosphere in my room.
and I wanted to look at the beginning of a thought, because everything is arising, even this sense of I or me, it comes from thinking. And so one has to go right at the source of the thinking. And when I really, with all my energy and attention and curiosity, when I tried to pick up the beginning of a thought, my mind stopped. And it was a very strange experience of having no thinking, a very silent mind. And in that, one can see everything very clearly. One can see our senses can function without thinking. And it was then every time whenever I had time, I would sit quietly and go right at the root of thinking, and my mind will stop. And there was no fear or anything about the mind coming to a stop, because many people say that when their mind stops, it's like a psychological death, and it is very frightening. And so most people, they don't want silence because it is frightening. But I feel that that silence is the freedom. So maybe freedom could be very frightening, but it was not frightening to me. So I kept on looking very clearly at my own thinking, and then some changes started happening in my body and in my brain. And then I found out that Krishnamurti was alive, and he was coming to California every year. So I found the address of Krishnamurti Foundation in California, and I wrote a letter to Krishnaji, and I wrote to him that I have been reading Ramakrishna and Vivekanand for many years, but after reading your book, I I sense that a human being can go very, very far in this spiritual field, because Krishnamurti denies all kinds of experience. And he says that experience come and go. What is important is to live in the present, whatever is happening, to be in touch with our thinking and not to analyze it, not to do anything, not to interfere it, but to move with it, moving with thinking. And in that, there is no separation of this I which is coming. And so the thinking can go on without duality, and that thinking will go in a very proper order as long as this awareness, which Krishnamurti says, that awareness is not a part of thinking. It is a different dimension than thinking. And that awareness is not awakened in most human beings, because our mind is continuously thinking and feeling, and we are living in the plane of thinking and feeling. And awareness or intelligence is buried under these dense layers of thinking and feeling. So as long as our mind is chattering, that awareness or intelligence has no gap to come up. But when our mind becomes silent, then some gap is created in the plane of thinking and feeling, and that awareness can arise and come on the top
of the plane of thinking and feeling, and it can see whatever thinking is going on. And so our main problem, I feel, for human beings is not thinking. Thinking doesn't create any problem, but the lack of awareness or attention or whatever word we use, when it is not there, when this awareness is not there, then there will be anger, fear, loneliness, boredom, jealousy. All these things will arise, and it will multiply, and it will make everything very, very complicated, our life, our relationship. But when this awareness comes, which can see thinking clearly, then if there is anger is arising in case, it is seen at its root, and then it goes away. So the problem, it doesn't multiply, it doesn't become very serious problem. So problem may still come, but in this choiceless awareness, whatever problems are coming, they can be seen at its root. And as Krishna ji says, the perception is the action. So when we really see that whatever is arising, then the problem goes away like that. So this is what I feel. And then I continued reading Krishnamurti books for 5 years. And then I completed my PhD at Iowa State. And I went to Canada. And I was doing a research, postdoctoral research in electrical engineering at University of Waterloo. Then in 1977, I went to California first time to listen to Krishnaji's talk, and I saw him. And what he was saying, that was not new to me because I had read all his books. But California is a very beautiful place, and you meet many people from many different countries. They come to Krishnamurti. And so maybe let me stop here. And if you have any question, maybe I can listen to you by keeping my mobile near my ear. Okay? Yes. Yeah. ठीक है सर, आपने इस बात को रेखांकित किया कि देखने से हमारे अंदर जो विचार चलते रहते हैं वे थम जाते हैं या रुकने लगते हैं। एक बात यह आपने कही, जैसा हम लोगों ने समझा, और दूसरी बात यह आपने कही कि जागरूकता, अवेयरनेस एक मिनट। आप सुन पा रहे हैं? कैन यू हियर? यस, आप बोलिए। हाँ, तो एक बात आपने कही कि विचार चलते रहते थे और उनको कैसे उनके साथ व्यवहार किया जाए वो पता नहीं था। लेकिन कृष्ण जी को सुनने के बाद यह बात प्रकाश में आई कि विचारों को देखा जाए। तो फिर उन विचारों को देखने के क्रम में यह बात भी आई कि सजगता जगह लेने लगी। विचारों के पूरे संसार में अवेयरनेस आने लगी और उस अवेयरनेस के आने से विचार ठीक तरीके से काम करना शुरू कर दिए, या फिर जो विचार अनर्गल उपद्रव करते थे वे रुकने लगे। यह दो बात। और तीसरी बात थोड़ा-सा जो हमारा सवाल है वो यह है कि आपने कहा कि देखने से वह चीजें रुकने लगी। तो यह देखने वाला कौन है? जैसे पहले हम इस तरह से देखते हैं, हम इस तरह से अपने को पाते हैं कि सोच विचार में हमें ऐसा लगता है कि हम ही सोच विचार कर रहे हैं। मैं ही विचार कर रहा हूँ, मैं विचार को बदल सकता हूँ या नया विचार ला सकता हूँ या पुराने में हेर-फेर कर सकता हूँ।
ठीक इसी तरीके से क्या मैं अब विचारों को देख सकता हूँ या विचारों के प्रति जागरूक हो सकता हूँ, या यह भी सवाल उसी के साथ साथ संलग्न है कि यह जागरूकता क्या हम हमारे प्रयास से आ रही है, या यह जागरूकता हमारे अंतस में है, जब हम उसे अवसर देते हैं तो वो ऊपर आ जाती है। तो थोड़ा इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। हाँ, ओके, यस। आपने ये प्रश्न पूछा, यू आस्क दैट व्हाट इज दिस अवेयरनेस? That awareness, it arises by itself. All we can do is to gather all our energy, curiosity, to just look. And in that look, it may happen that your mind stops. And then there is this awareness in which there is no one there. It is just a state in which there is no thinker. There is no sense of I who is observing. It is just observing, as like Krishna ji was asking, how do you look at a tree? And by asking that question, he was saying that, is it possible for you to look at the tree without the image, without the word tree, without the knowledge which you have gathered about the tree? So this kind of awareness, it exists in all people. But what happens that when we go to school and college and university, we gather a lot of knowledge, and then we are not able to look at a tree or a human being or a nature. Let me tell you that one little girl, about 2 years old, she was looking at the full moon, and she was smiling and telling everybody, look, there is something there. And she did not know what she was looking, because she had not gone to school. And she was only 2 years old. And so she was seeing everything very fresh. And little children, they are looking everything very fresh. But once they go to school and they know the language, and then that kind of looking goes away. And I remember that one another girl, this young 2 years old girl's older sister, she was about 7-8 years old, and she was going to school. And during Diwali time, there were firecrackers going in the sky with a beautiful pattern, colorful pattern, going up and falling very gently. So I called that girl and said, look, there are beautiful firecrackers. And she said, oh, haven't you seen it? And maybe she had seen it. And then the next time, generally people see with that knowledge, and so it becomes very dull. So when we see the same, yes, आप क्वेश्चन करना चाहते हैं? यस सर, ये महत्वपूर्ण बात आ गई इसमें कि एक छोटी बच्ची जिसके अंदर अभी बुद्धि विकसित नहीं हुई है, वो किसी भी चीज को, जैसे आपने कहा चांद को, बहुत साफ मतलब ताजा देखती है। लेकिन जब हो जाती है बच्ची, जो 7 साल की हो गई, तो उसके अंदर थोड़ा ज्ञान आ गया उसके संदर्भ में कि यह तो हमने देखा ही है, तो वो उतना ताजा नहीं देख पा रही है, वो बासी देखती है। और यह बात भी हम लोग इसमें क्लियर कर लें कि
स्कूल न जाने से, ज्ञान न होने से यह अर्थ नहीं है कि हम लोग चीजों के प्रति अवेयर हो जाएंगे। Right. Yeah. Yes. Yes. दो तथ्य हैं, एक चीजों को ताजा देखना और दूसरा चीजों के प्रति सजग होना। अवेयरनेस, सीइंग थिंग्स इन अवेयरनेस एंड सीइंग थिंग एज ए फ्रेश। क्योंकि एक एनिमल भी है, जानवर भी है, वो किसी भी चीज को ताजा देखता है। एक छोटा बच्चा है, वो ताजा देखता है, बट एनिमल नेवर सी इन अवेयरनेस, या ए बेबी नेवर सीज इन अवेयरनेस। So what is that awareness which we are talking about in our day-to-day life? Yeah, please. Okay. Yeah. Yes. You are asking what is that awareness, but it is not a thing, but it happens when we go through silence, and maybe some changes begin to happen in our body and in brain, and the brain, the quality of the brain changes. And I remember that for many, many years, all these years, my brain is continuously throbbing for all these 40 years, more than 40 years, even after reading Krishnamurti, and I could feel that there were some changes happening. So my way of looking also changed. And before, I was not aware of the beauty of our campus. But after some changes begin to happen in the brain, then I saw real beauty of the trees, of the lake, and the swan moving very gently, and also the expression on the faces of people, the colors, everything become very, very new. So such a thing, such a thing is it is possible in spite of our going to school, university, college, in spite of gathering knowledge, it is possible to awaken this awareness, but we cannot do it by our will. Only when we become very curious to observe the inner world, whatever is happening, then something happens, some changes begin to happen, and then we acquire a new way of looking at everything. Okay. So can we say, sir? Yeah. Yes. Yeah. Can we say this, that in observation or in awareness, observation takes place as a new, as a fresh, but only seeing as a fresh doesn't include that there is a awareness. जैसे एक बच्चा देखता है, या एक कोई भोला भाला आदमी देखता है, या हम ही कहीं किसी जगह पर जाते हैं, पहली बार जब किसी चीज को देखते हैं तो बड़ा आंख खोल करके देखते हैं, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि हम जागरूक होकर के देख रहे हैं, होश में देख रहे हैं। तो होश, अवेयरनेस और फ्रेश होना, ये दोनों दो बातें हैं। अवेयरनेस के साथ ताजा देखना आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो बिना ज्ञान के देख रहा है वो होश में ही देख रहा है। क्या यह बात आप कह रहे हैं? या your question is very good question, that people who have not gathered knowledge, like maybe the tribal people, or those who have not gone to school, college, they may not have also this awareness, may not awaken, but it may awaken when we become very curious to look at the inner world, and while looking inner, when the mind stops
and you do nothing, some changes may happen. And it happens, I think, in very, very few people because we don't know why it happened, why this changes begin to happen in the brain of a human being, because of a person is very, very curious to look inward. And so I don't have the answer to what is it that awakens this new way of looking in a human being. I'm sure many, many people must be meditating for many, many hours. And still, like I remember that one sannyasi had meditated for 25 years in the Himalayas, and he came to Krishnaji and he said that he has not really got the freedom from all these psychological problems which are coming from thinking. So in spite of meditating for many, many years, still a person may not come to that state which can see thinking very, very clearly. At its root, yes. Yes. सर, लगभग सारी दुनिया में जितने भी ध्यान के शिक्षक हैं, जितने भी लोग मेडिटेशन सिखाते हैं, आप सुन पा रहे हैं? कम आता है, हाँ। अभी सुन पा रहे हैं आप? हाँ, ओके, बोलिए। सारी दुनिया में इसी तरह के ध्यान को बताया जाता रहा है, जिसमें साक्षी होकर के देखना, बिना हस्तक्षेप के देखना, और बहुत सारी ध्यान विधियां भी इसी ख्याल को लेकर के विकसित की गई हैं, जैसे विपस्सना है वगैरह, साक्षी का ध्यान है इत्यादि। तो और ऐसा देखने में भी आता है कि हम लोग सालों साल वही चीजें करते रहते हैं, घंटा 2 घंटा रोज निकाल भी लेते हैं, या सारा दिन इस तरह से साक्षी का ध्यान करने की कोशिश करते हैं। थोड़े जीवन में चेंजेस भी आते हैं, थोड़ा हमारे शारीरिक हो सकता है कि मस्तिष्क की कोशिकाओं में थोड़े चेंजेस आते हैं, थोड़ा जीवन भी व्यवस्थित होता है, पर कोई आमूल रूपांतरण जैसा नहीं घटित होता है। हम देखते रहते हैं चीजों को, पर वो बहुत दूर तक नहीं लेकर के जाती है, थोड़ी व्यवस्था हो जाती है। तो मैं थोड़ा सा कृष्ण जी के इस वक्तव्य को भी समझना चाहूंगा कि वे कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन विदाउट ऑब्जर्वर। और हम लोग जब भी अवलोकन करते हैं, उसमें अवलोकनकर्ता के रूप में ही करते हैं। हम निर्णय लेते हैं कि अब हम देख रहे हैं, तो वो तो अवलोकन करता ही हो गया। तो क्या कोई ऐसा अवलोकन है जो बिना अवलोकनकर्ता के है? और इसके साथ ही एक बात और आपने जी, yes, it is a very a person who is able to look at a tree without knowledge, without image, without the sense of observer, then the person will say, yes, it is possible to look. And that is why Krishnamurti was asking even little children in Rishi Valley School that how do you look at the tree? How do you look at your friend's face? And to teachers, he used to say, how do you look at your wife's face? So, and then at one time, one boy, he was my student, 8th standard, and he asked Krishnaji that, can you see the tree without the observer? And Krishnaji said, of course, otherwise I will not be will not be asking such question. So I can say without any hesitation that yes, my looking is without the observer. And if I am looking at a tree, my mind is silent. But if someone comes and asks me what tree is that, then I may say it is a mango tree or a neem tree. But when I am looking, there is nothing. It is just looking.
I look at the stars or human beings also like that. Yeah. And yes, 1 minute, 1 minute. And when I was young, I used to look at the rose flower in our garden, and used to look very beautiful, the rose flower. And then there's a dewdrop on it, and the sunlight falling on the dewdrop. And I used to look at this dewdrop as like a diamond shining with changing colors. But after I went to school and college and university, I lost that way of looking, like the way children look. But after reading Krishnamurti and becoming very, very curious about my inner world, then I begin to get that. And now my looking is like that only. So I would say there is no observer, but everything is seen very fresh, new. And every day it is like that. Yes, आपका कोई question? Yes. हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई हर्षद सर कि कोई व्यक्ति इतनी प्रामाणिकता से यह बात कह सकता है कि बिना अवलोकनकर्ता के अवलोकन संभव है। ऐसा अवलोकन जिसमें किसी भी तरीके से अवलोकनकर्ता की ज़रूरत नहीं। आई एम ग्लैड। अब थोड़ा इसको और भी खोलते हैं। मेरा जो सवाल है कि जहाँ अवलोकन है, वहाँ अवलोकनकर्ता की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारे अंदर एक भ्रांत धारणा है कि किसी भी अवलोकन को करने के लिए अवलोकनकर्ता ज़रूरी है। यह एक मिथ्या धारणा है, यह झूठी धारणा है। अवलोकन में विश्लेषण करने के लिए, अवलोकन की व्याख्या करने के लिए अवलोकनकर्ता की ज़रूरत है। जब अवलोकन में ये बताना हो कि ये फला ट्री है, ये अच्छा है, ये बुरा है, यह मेरा है, ये पराया है, तब अवलोकनकर्ता की ज़रूरत है। लेकिन जब सिर्फ अवलोकन किया जाना हो, तो अवलोकन किया जाना शायद हमारे अंदर इनबिल्ट है, लेकिन बात यहाँ पर समाप्त नहीं होती है। सवाल यहाँ यह बात मैंने कही, इस पर भी आप थोड़ा प्रकाश डालिएगा कि अवलोकन में किसी भी तरीके से अवलोकनकर्ता की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि उसका विश्लेषण न किया जाना हो। एक बात इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि यह भी सवाल हम सब मित्रों के बीच में उठ करके आता है कि फिर अगर अवलोकन अपने से है तो फिर हमको करने की क्या जरूरत है? तो फिर बच्चा कुछ नहीं करता, वो तो अवलोकन को उपलब्ध है। जानवर, पशु, पंछी हैं, वो कुछ नहीं करते, वो सब अवलोकन को उपलब्ध हैं। फिर तो हमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब होना होगा तो हो जाएगा। इसके संदर्भ में थोड़ा आप बताएं कि जैसे आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, क्यूरियोसिटी, उत्सुकता, जानने समझने की उत्सुकता। क्या कोई और भी एक बीच में चीज जरूरी है? जब तक वो ना घटे तब तक यह जागरूकता का अवलोकन जगह नहीं ले सकता। वो हमारे अंदर है, वो हमारे भीतर है, लेकिन जब तक हम उसको चैलेंज ना करें तब तक वो अवेयरनेस हमारे अंदर स्प्राउट नहीं हो सकती। इस पर थोड़ा प्रकाश what you have said is that, or what I feel, that when this intelligence or awareness is awakened, it can use intellect, and one can do scientific research also. But just the intellect, the knowledge cannot lead you to intelligence, which is a higher faculty. So how this gets awakened, this intelligence or awareness, to see everything as new, fresh, I don't know how it happens. So I'm not able to answer your question. What is it that gives rise to looking everything very fresh? What is it that maybe, I think in our philosophy, Indian philosophy, they say that there is an energy which is
at the base of the spine, and when that energy is awakened, it goes to the brain, and then there is what Krishnaji calls a mutation of the brain cells. So when such a thing happens, the quality of the brain changes because of a lot of energy going, and generally our energy is wasted. Everybody has the energy, but because of many problems, lot of conflicts, lot of desire, ambition to become somebody, like a good musician or a sports person or actor. So most people may be passionate about becoming somebody, but a person who doesn't want to become somebody, who is just curious to observe, um, like a child uh, looking at the thinking itself, then something maybe happens, some kind of energy goes to the brain, uh, changes the quality of the brain, and then a person feels that a new life has come, a different way of living, listening, uh, looking, learning. So only when a person feels that way, then we'll understand. Otherwise, Krishnamurti can be understood intellectually by many people, but there is no freedom with that intellect. Intellect is limited, thinking is limited. So there, I am not able to answer that why it some people come to a different way of looking, listening without this I or me looking. And आपने कहा, yeah, okay, right. सर, जहाँ तक मैंने मेरे आपसे संवाद हुए हैं और आपने प्रकाश डाला है, आपने कृष्ण जी की शिक्षाओं के अतिरिक्त जो वैदिक धर्म की शिक्षाएँ हैं, विशेष करके अद्वैत वेदांत और कुछ जो ये अभी पिछली सदी के शिक्षक हुए जैसे रामकृष्ण परमहंस, वो तो और पिछली सदी के थे, और रमन महर्षि और इस तरह के आपने स्वामी विवेकानंद का भी नाम लिया। तो इनकी शिक्षाओं से भी आपका गुजरना हुआ और कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं में भी यह बात मुझे थोड़ी-सी समझ में आई और कभी-कभी आप कोआन का भी उदाहरण देते हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्वेश्चनिंग का कोई रोल है क्या इनर जर्नी में या सेल्फ ऑब्जर्वेशन में? कि खुद से एक जैसे उदाहरण के लिए रमन महर्षि की शिक्षाओं में आता है कि आप खुद से पूछें कि मैं कौन हूँ? और कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं में आता है कि कौन की बजाय मैं क्या हूँ? यह पूछा जाए। और कृष्ण जी की शिक्षाओं में एक और भी बात आती है इम्पॉसिबल क्वेश्चनिंग की। ऐसे सवाल उठाना जिसका मन उत्तर देने में सक्षम ना हो। तो मैं थोड़ा इस पर भी आपसे जानना चाहता हूँ कि क्वेश्चनिंग क्या कोई भूमिका निभा सकती है उस स्टेट से जो जहाँ पर अभी हम लोग हैं, जहाँ इंटेलेक्ट ही सब कुछ बन करके बैठा हुआ है, वो अवेयरनेस को भी वो गाइड करने की कोशिश करता है कि आप दिन भर अवेयर रहिए, अरे आप अवेयर नहीं रह पाए, तो वो अवेयरनेस को भी कहीं न कहीं गाइड करने की कोशिश करता है। तो इंटेलेक्ट वाले जीवन से, इंटेलेक्ट के गाइडेड जीवन से एक्चुअली जो अवेयरनेस का जीवन है, जहाँ पर जागरण और वो जागरण जो कि हमारे अंदर इनबिल्ट है, उस जागरण तक भी क्या क्वेश्चनिंग, सेल्फ क्वेश्चनिंग कोई माध्यम बन सकता है? माध्यम की वैसे बात नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा जो याद आता है, मुझे ठीक से संदर्भ याद नहीं है, पर कहीं पे कृष्ण जी ने ये कहा है कि आप जीवन भर यह सवाल उठाते रहते हैं, इसमें पूछताछ करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। क्या आप ये सवाल एक मुश्त नहीं उठा सकते हैं कि इस पूरी संरचना का एक बार में बिना समय लगाए अंत क्या है? तो इस तरीके से वो कुछ सेल्फ क्वेश्चनिंग को भी प्रोवोक करते हैं। तो आपने
लंबा समय इसमें दिया है, थोड़ा इस सेल्फ क्वेश्चनिंग पर भी प्रकाश डालें कि ये क्या कारगर है या इसका कोई रोल नहीं है। Yeah, okay. Yes, yes, a very good question आपने पूछा है. Before reading Krishnamurti, I had not asked the questions which Krishnamurti asks, like why do you think of yourself as an Indian or a Hindu? But by reading the book of Krishnamurti, and those questions were very much relevant. And I looked within and I said, yes, why do I think of myself as Indian or a Hindu? And Krishnaji questions, it helped me. But I myself have not asked questions. I took Krishnamurti's questions as something, my question, and then I just begin to look inward. And I found that what is the quality of the question? The question which you ask, is it really an intellectual question, or it is something so vital to you that your mind really stops what Krishnaji would call impossible questions, like Raman Maharshi's question, who am I? If one gives an answer very quickly, it's an intellectual question. But to observe this I, it can be observed only when the mind really stops. So one can go on asking questions, like many people who are interested in Krishnamurti. They give a lot of importance to questioning. Krishnamurti himself was giving a lot of importance to questioning, but Krishnamurti was asking not in order for him to learn about anything, but he was asking questions so that his listener will take those questions as something as a challenge, and then they look inward without forgetting everything and just looking. And so my question is it possible to look without asking question and just whatever is coming, because so much our thinking, we are not thinking is happening to us. Like when I get up early in the morning, sometimes I hear some song comes to me which I heard long time ago, and I was not trying to remember that song, but it come, and if I don't observe it, it will again come. So when I see that a song has come, awareness, then it goes away. So our thinking, it happens by itself. We are not thinking. It's out of the language which we have studied and the memory which is stored. Out of that, thinking happening mechanically, and then if it is not observed, it will go on and it will be a waste of energy. So sometime I give an example which I and a friend, we were walking on a street in America, and we saw that there were a group of people, they were standing in a circle and they were laughing. And we wanted to know why these people standing on a street laughing. So when we came close, we saw that at the center of the circle, there was a rat. It had a short tail and it was trying to catch its own tail, and it was not able to. It was going round and round, and it was caught into that mechanical action. And the rat was not aware that there were people around and they were laughing. And so this is I would say that I was like that only before reading Krishnamurti, that so much thing was going on, but I was not aware. Maybe there was a beautiful flower or a beautiful human being passed by, but if you are occupied with your own thinking and you are not observing it, then you miss the real beauty. And now what happened that
after 2 minutes, somebody from that circle touched the rat, and the rat moved straight and escaped. So that kind of touching, when it happens to our mind, a kind of a light insight or perception, then our thinking, then this awareness makes our thinking go in a proper way without creating any problems in relationship also. So it really helps when this awareness is happens in our life. Um, we stop creating many problems for ourselves. Otherwise, we react a lot. But because of this awareness, we can listen, even listen to criticism. If somebody criticizes, and we listen, and then we can respond properly, So I don't know. Finally, I will say question is important. If you have not question in your life, some like the questions which Krishna ji is asking, but if you keep on asking the same questions every day and nothing really happening, and your mind is not really become silent and look, and if there is no changes happening in your life, then it is a mechanical life of even questioning can become like a habit. Yes. Okay, I have finished. Yeah. सर, क्वेश्चनिंग को मैं इस तरह से देखता हूं, इसको एक यदि हम सीधे देखने में समर्थ हैं तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। चीजें सामने हैं और उनको बिना ज्ञान के देखा जा सकता है, तब ऐसी अवेयरनेस के साथ देखा जा सकता है जो अवेयरनेस हम नहीं ले आ रहे हैं, तब तो फिर कोई बात नहीं है। और नहीं ये घट रहा है तो हम फिर प्रयास से नहीं ला सकते। लगातार हम अवेयरनेस के बारे में रोज किताबें पढ़ रहे हैं, रोज अभ्यास कर रहे हैं, विपස්සना जा रहे हैं, उससे भी बहुत दूर तक बात जाती नहीं है। मैंने एक चीज यह पाई है, मैं आपके सामने इसको रखना चाहता हूं कि क्वेश्चनिंग जो कि एक तरफ वह इंटेलेक्ट का हिस्सा सा लगती है, लेकिन दूसरी तरफ वो जीवन से जुड़ी हुई है। यदि मेरी क्यूरियोसिटी है जीवन को जानने समझने में, तो वो बहुत ही गहरे तरीके से काम करती है। जैसे यहाँ पर यह चीज मेरे सामने रखी हुई है और मैं इसको एक ही तरीके से देखने के लिए बाध्य हूं। आप मेरे सामने हैं और आपको मैं बस हर्षद नाम से ही देखने के लिए कंडीशन किया गया हूं, संस्कारित किया गया हूं। तो मैं यहाँ पर यह लेकर के आता हूं कि क्या इनका ऐसा अवलोकन है, ये जो चीज सामने है या यह जो व्यक्ति सामने है, इनका क्या कोई ऐसा अवलोकन है जो मेरी भूमिका से मुक्त है, जो मैं नहीं कर रहा हूं, या जो अवलोकनकर्ता से नहीं है, यानी जिसमें मैं डिस्क्रिप्शन नहीं डाल रहा हूं। पहले क्या होता है, मैं डिस्क्रिप्शन डालता हूं कि ये फला है, ढिका है। फिर मैंने कृष्णमूर्ति को सुना और कृष्णमूर्ति कहते हैं कि बिना विश्लेषण के, बिना नामकरण के देखिए। तो मैं अब अंदर अंदर नाम आ रहा है लेकिन उसको हटाने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो एक नया द्वंद बन जाता है भीतर। राइट। हमारे अंदर नाम आ रहा है, उनके प्रति जो हमने समय बिताया है वो आ रहा है, राग द्वेष आ रहा है, लेकिन हम कृष्णमूर्ति को हमने सुना है तो नहीं नहीं ये नहीं आना चाहिए, तो वो एक अलग द्वंद निर्मित हो गया। बजाय कि मुझे बिना नामकरण के सुनना है, मैं एक क्वेश्चनिंग की एक अपने भीतर कीमिया लेकर के आता हूँ, नॉट इंटेलेक्चुअली। जैसा आपने कहा वो बिल्कुल सही बात है कि रोज मैं मंत्र की तरह दोहराता रहूं तो फिर वो कहीं नहीं ले जाएगा। सच में ही जीवन में मैं प्रयोग करना चाह रहा हूँ, देखने में प्रयोग करना चाह रहा हूँ। तो उसमें मैंने ऐसा पाया कि मैं यदि यह सवाल उठाता हूँ कि यह जो चीज है या यह जो व्यक्ति है, इसका क्या कोई ऐसा देखना है जो मेरी भूमिका से मुक्त है, तो बात फिर तत्क्षण यह सामने आती है, मेरी भूमिका में कंप्यूटर शब्द है, मेरी भूमिका में इस व्यक्ति का नाम है, मेरी भूमिका में इनके साथ बातचीत जो हुई है उसके सारे संस्मरण हैं। लेकिन यह सब आते ही वह खारिज भी हो जाता है, क्वेश्चनिंग उसको खारिज कर देती है और वो देखना तत्क्षण वो शुरू हो जाता है जो मेरे द्वारा बनाया गया नहीं। यानी आंखें वह दिखाना शुरू कर देती हैं
अवेयरनेस के साथ, जो कि मैन मेड नहीं है। अब इसी हम्म, तरह से मैं और भी अपने जीवन में जब चीजों को देखता हूं, जैसे थिंकिंग प्रोसेस बुरी तरीके से चल रही है, उसमें हम्म, हमने कृष्णमूर्ति को सुना है कि उनको थिंकिंग को बस देखा जाए। अब हम्म, देखने जाते हैं वहां पर, तो देखने वाला आया है, क्योंकि कृष्णमूर्ति के ज्ञान से हमने अब देखने की एक नई हम्म, चीज की है। तो वहां पर देखने के बजाय हम ये सवाल अगर उठाएं वहां पर कि क्या हम्म, कोई ऐसा देखना है जो मैं नहीं कर रहा हूं, हम्म, माइंड थिंकिंग प्रोसेस का क्या कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन है, इज देयर एनी ऑब्जर्वेशन व्हिच आई एम नॉट डूइंग, हम्म, जो मेरे yes, द्वारा किया नहीं जा रहा है। तो और इसका इसका एक्सप्लोरेशन हम कर रहे हैं, इसको हम हम्म, पता लगा रहे हैं। हमको अभी तक नहीं पता है कि ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन है या नहीं है, हम सिर्फ हम्म, पता लगा रहे हैं कि क्या कोई ऐसा हम्म, ऑब्जर्वेशन है जो जिसमें हम्म, मेरी कोई भूमिका नहीं है, जिसमें मैं कोई कोशिश नहीं कर रहा हूं। हम्म, पाया जाता है हम्म, कि मेरी पूरी कोशिश, मेरी पूरी हम्म, भूमिका वो रुक हम्म, गई, और अपने हम्म, आप एक ऑब्जर्वेशन पूरी थिंकिंग प्रोसेस पे पड़ रहा है। तो आप भी बहुत सुंदर तरीके से इस पर प्रकाश डाल रहे थे कि मेरे शरीर में चेंज होते हैं, केमिकल हम्म, चेंजेस होते हैं, ब्रेन सेल्स में चेंजेस, पर वो अपने से हो रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मेरे उठने हम्म, बैठने में सजगता है, मेरे देखने yeah, में, खाने पीने में सजगता है, और वो सारी हम्म, की सारी चीज अपने आप हो रही है। चली गई वो हम्म, चीज, चली गई। दोबारा जब हम्म, ख्याल आया कि अरे ये तो विचार प्रक्रिया चल रही है, अपने आप क्वेश्चनिंग, मुझे फिर दोबारा उठाना नहीं पड़ा। उसी हम्म, क्वेश्चनिंग आर्ट ने फिर से इस चीज को सामने लाया कि इज देयर ए ऑब्जर्वेशन व्हिच आई एम नॉट डूइंग, ऑब्जर्वेशन इज टेकिंग हम्म, प्लेस। हम्म, तो सर, right, इस पर इस पर हम अनुसंधान कर रहे हैं, इसके साथ प्रयोग कर रहे हैं, तो इस पर भी कुछ हम्म, प्रकाश डालें। yeah, yeah. Yes, we can only look. If we try to go according to what Krishnamurti is saying, and we are not really silent and looking, then I think Krishnamurti's teachings can create a lot of conflict, Yes. because you can't decide to look at a tree without knowledge. Yes. It will automatically come if it is habit. But when Krishnamurti asked, is it possible to look without this knowledge, without even this sense of I coming into picture? And as long as a person has not seen without this observer, he will keep on asking questions. But I don't ask questions, such question. Is it possible to look? I would say, yes, that is the way it is. And we are not doing anything, but it happens. The knowledge does not interfere, though the knowledge is stored there. Yes. But now, how this happened, I Because can't you say. I think it is just curiosity, intensity, honesty to just look, whatever it is. Not even I was not thinking about Krishnamurti teachings. After when I read Krishnamurti, I would read only maybe one page and keep the book away and not interested in thinking about what Krishnamurti was saying, but just looking curiously, looking at the source of thinking Yes. itself. And that itself requires some kind of freedom at the beginning. And that is why Krishnaji says freedom is at the beginning, not at the end. Not by doing certain practice according to Krishnamurti and then you come to that state. I don't think. But your own passion, your curiosity, energy,
to look without any motive, because all the time something is going on in our mind. So it is like a train which is going on. You get into the train and then let the train move, like the train of thoughts, let it move. But when out of this thinking, when you say this thinker comes and then say, I like it, I don't like it, then there is a duality has started. So the beauty is moving with what is, whatever it is, and not what should be. Yes. So even to have this idea that I want to become free, I want Yes. to implement Krishnamurti's teachings, I think that is also not right, I feel. Only Yes. we can just look at our inner world, whatever is happening, and looking with like the way children look, without trying to gather knowledge and express it to other people. Krishnamurti is doing everything because that is not the way he learned. I think it's not by asking questions, but he was very, very sensitive, and he used to go for walks in nature, and he had the ability to observe without thinking. And he used thinking to explain it to the people, listener. But I don't have the ability like Krishnamurti to explain in words how to come to that uh, way of looking in which there is no observer. Yeah. So I'm not a teacher. Uh, I don't know how to explain anything, but I can look. Yes, yeah, yes. सर बहुत अच्छे से आपने अपनी बात पर प्रकाश डाला है। आप अपनी बात बहुत अच्छे से कह पा रहे हैं। 1-2 प्रश्न हैं यहाँ पर हमारे सामने, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ये सिद्धार्थ ने पूछा है कि हाउ टू अंडरस्टैंड दैट ऑब्जर्वर इज़ द ऑब्जर्व्ड एज़ ए फैक्ट? Mhm. हाउ टू अंडरस्टैंड दैट ऑब्जर्वर इज़ हाँ, ऑब्जर्व्ड? आपने कोई प्रश्न पूछा ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड का? Yes, someone asked it. In a psychological sense, that when anger is coming in you, that anger, you want to stop it, then there is a duality. But when you feel that you are anger, there's just looking at it, then there is no duality. So observer is the observed. It is true in a psychological sense, but it is not in a physical sense. When I look at a tree, I am not that tree, but yet, yes, I can look, or there is a look in which the tree is seen as it is, but I am not that tree. But in psychological sense, anger is me. It is not separate from me. So observer is the observed is true in a psychological sense, not in a physical sense. Okay? उनका Yeah. प्रश्न ये था सिद्धार्थ का, वो ये पूछना चाह रहे थे कि हाउ टू अंडरस्टैंड दैट ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड एज ए फैक्ट। आपने अपनी बात की। मुझे ऐसा समझ में आता है सिद्धार्थ कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड को कुछ करके नहीं समझा जा सकता है। Right. कैसे आप Yeah. समझ सकते हैं? इसको दूसरी तरीके से समझा जा सकता है। उसको थोड़ा मैं एक उदाहरण से समझाऊं। जैसे हर्षद जी ने कहा कि क्रोध के साथ हमने बहुत कुछ करके देख लिया। क्रोध को हमने दबा करके देख लिया, क्रोध को प्रकट करके देख लिया, क्रोध को के लिए हमने संकल्प लेकर के देख लिया कि अब दोबारा क्रोध नहीं करूंगा, क्रोध के लिए पश्चाताप करके देख लिया, कि ग्लानि में जा करके देख लिया, पर क्रोध खत्म नहीं हो सका। लेकिन
यह सारी चीजें इस समझ के साथ घटी हैं कि मैं क्रोध से अलग हूं। इसके कारण ही हम उसके साथ कुछ संकल्प विकल्प नहीं करेंगे, करेंगे, सही है, गलत है, अच्छा बुरा, यह सब हम कर पाए क्योंकि हम समझते हैं हम क्रोध से अलग हैं। तो इसलिए कुछ करके हम कभी भी इस तथ्य को नहीं जान सकते कि मैं और क्रोध एक ही चीज है। इसको दूसरे तरीके से जरूर प्रमाणित किया जा सकता है। वो ऐसे कि जब हम यह देखें कि ये जब हम इस तरीके से प्रयोग करें कि जब क्रोध घट रहा हो, हम यह समझें कि क्रोध के साथ कुछ भी करना वह छेड़खानी है। राइट। या हम इस सवाल को उठाएं कि इस क्रोध का क्या कोई ऐसा देखना है, इज देयर ए ऑब्जर्वेशन ऑफ एंगर विच इज नॉट डूइंग बाय मी, विच इज नॉट डन बाय मी, जो मेरे द्वारा नहीं किया जाता है। कोई ऐसा अवलोकन, मैं क्रोध को देख रहा हूं ऐसा नहीं। एक्सप्लोर करने के लिए इस प्रश्न को हम अपने अंदर अंगीकार करें कि क्या कोई क्रोध का ऐसा अवलोकन है जो मैं नहीं कर रहा हूं। अवलोकन है, भरपूर अवलोकन है, पर मैं नहीं कर रहा हूं। ऐसे में पाया जाता है कि क्रोध की पूरी संरचना अप विलीन हो जाती है, उससे सिद्ध राइट। हो जाता है, उस विलीन होने से सिद्ध हो जाता है। क्रोध की अपनी पूरी संरचना के अपने आप परिसमाप्ति से सिद्ध हो जाता है कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। एंगर और एंग्री में कोई भेद नहीं है, क्रोध और क्रोधी में कोई भेद नहीं है। ये इस तरीके से शायद प्रमाणित हो सकता है। राइट। हर्षद सर, एक और सवाल है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये गौरी सिंह का एक सवाल है। ये सवाल है, जब विचार चल रहे होते और मुझे याद आता कि प्रश्न उठाने हैं, फिर प्रश्न उठा के और फिर विचारों में खो जाते, तब वो मंत्र की तरह हो जाता है। यह बात हालांकि हर्षद जी ने कही है कि अगर उसको हम मैकेनिकली उठाएंगे सवाल तो वो काम नहीं करेगा। और फिर राठौर ऐसी बात ये गौरी पूछ रही हैं, ऐसा कई बार देखने में आया, हालांकि यह बात बाद में देखने में आई। तो यह इस पर थोड़ा प्रकाश डालें कि क्वेश्चनिंग जैसी जो चीज है उसको मैकेनिकली मंत्र की तरह उठाना या एक्चुअली उठाना क्या है, इस पर थोड़ा हर्षद सर आप प्रकाश डालें। No, if the question is very, very interesting, and then your mind will stop and just look. There is nothing to find out in this field, only to look. And that look is freedom. So, freedom is necessary to, after you ask the question, and if that question is very, very important question, then your mind will stop. And then whatever it comes, it can be seen without this me or observer only seeing. There is no person who is seeing. And when we get the answer of the question, it won't make any change in you. Like many people ask questions to Krishnamurti, and he explains very well. But as long as this looking inward without knowledge, and whatever is arising in your mind, if it is not seen clearly, then it is a verbal only. So this spirituality is not verbal. We are making it into, because we have learned a language, and we are using the language to express something which is non-verbal. And a person who has some insight, when such a person is saying something
and is something verbal which comes from non-verbal state of clarity, then such words are useful, like words of Buddha or Krishnamurti or great people when they are speaking, but their answering question, if just satisfies the intellect, then there is no change. We have to find out for ourselves what he says, the truth of that, and that is non-verbal. And only when our mind stops and we see whatever is unfolding in our mind clearly, not from knowledge, not from thinker, but observation, awareness, choiceless awareness, then there is nothing to understand. Like once Krishnaji told us in Rishi Valley that there is really nothing to understand. Do you agree? And then Pupulji asked, sir, how can you say that there is nothing to understand? Then again Krishnaji says there is nothing to understand. Do you agree? And everybody was very quiet. And then I said, sir, I agree that there is nothing to understand. Then Krishnaji said, you explain to Pupulji, why do you say that there is nothing to understand? Then I said that there is only to see whatever is unfolding in your mind. Yes. And that tells you everything. Yes. Google will not answer when you ask a question. Google, tell me what is happening in my mind. Google has no answer. Only you have to experiment, sit quietly with curiosity, energy, and then see if there is something new happens. But asking question, if it makes your mind stop and you become very quiet and begin to see, listen, everything, then it's a good question. Otherwise, to gather knowledge about all this thing is meaningless, I feel. You know. If a person is a teacher, yeah, then he may gather the knowledge, but it's not very important. Yes, आप बोलिए. हर्षद जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही. उस बात से मैं भी ताल्लुक रखता हूँ. मुझे भी यह बात समझ में आती है जब भीतर खुद को देखता हूँ. तो असल में कुछ भी वहां पे समझने के लिए नहीं है. हमारा माइंड, हमारा देखना, हमारा सुनना इस तरीके से ट्रेंड है कि भीतर जब हम देख रहे हैं तो कुछ समझने के लिए देख रहे हैं. पेड़ को देख रहे हैं तो उसको उसका नाम देने के लिए कि ये नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, इसके लिए देखें. शायद हमारी शिक्षा दीक्षा ही ऐसे हुई है कि हर चीज को किसी कारण से ही देखने के लिए, जबकि हो सकता है जीवन सिर्फ देखने के लिए. आपने जो कृष्णमूर्ति को उत्तर दिया है वो मुझे भी अगर कहना होता तो शायद मैं यही कहता कि जीवन सिर्फ देखने के लिए है, वो व्याख्या करने के लिए या ज्ञान जुटाने के लिए, समझने के लिए नहीं है. जब यह ज्ञान जुटाने हम लगते हैं, समझने लगते हैं, तो वो जो कला है देखने की, सिर्फ देखने की, और देखना यानी जीना. देखना और जीना दो अलग चीजें नहीं है. देखने और जीने की कला हमसे खो जाती है. बहुत सुंदर तरीके से हर्षद सर आपने ध्यान के संबंध में इन बातों को रखा है, और मैं चाहूंगा कि आप निचोड़ में अपनी बात फिर से अवलोकन या जो भी आप कुछ कहना चाहें कह दें, और उसके बाद फिर हम अगले सत्र में भी आपको आमंत्रित करेंगे. हम किसी और बिंदु पर विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे. उससे पहले आप कुछ निचोड़ में कह दें. आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है. मैं एक्सप्लेन ऐसे नहीं कर सकता. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, बट समटाइम्स व्हेन आई राइट, then something comes spontaneously and then I share it with people. But I don't have the ability to explain in words everything, because I feel that Krishna ji could do it. Raman Maharshi was not doing much. He was very silent, and whatever he said, maybe that affected some people. So it is not a verbal. The whole thing is non-verbal, but
some words, even Ashtavakra or Krishnamurti, when they are saying something in words, there is a meaning behind it, and that we have to find it by our own meditation and not repeating Krishnamurti or Ashtavakra or other teachers. We have to find out for ourselves, and we can find out if we are really, really passionate about it. And okay, so I have finished. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद हर्षद सर आपका, आपने समय दिया और अपनी मूल्यवान समझ हम लोगों के सामने साझा की। हम फिर से आपको आमंत्रित करेंगे आपसे समय लेकर के और फिर किन्हीं बिंदुओं पर संवाद करेंगे। आपको बहुत सारा साधुवाद हम सभी मित्रों की तरफ से और बहुत Thank सारा you. प्रणाम। Thank you. Thank you. Thank you.